Assalamu alaikum ladies, क्या हाल चाल है? So today we are going to cover the topic of the reading process, and in this topic we are going to look at the different models for basically teaching reading and also develop an understanding of what is reading. So we are going to cover the basic definitions of reading. You all have this handout and you can have a thorough read of it in your own time, but today I'm going to cover these definitions and these models, and also I'm going to show you a few videos के जिसके through आपको reading के models की ज़रा ज़्यादा समझ आए और ये समझ आए कि हम top down models को या interactive models को क्यों इस्तेमाल करते हैं. So basically when we're defining reading, so reading means different things to different people. For example, for some the definition may focus on the recognition and decoding of symbols. Symbols क्या होते हैं? ये जो पेपर पे लिखा हुआ है, हमें ये सिखाया गया है कि ये डी की साउंड ये है, जब डी को ई से मिलाएं तो डी, और ये सारे लेटर्स को मिलाएं तो ये डिफाइनिंग बनता है. तो बेसिकली अगर किसी को ये लैंग्वेज नहीं आती तो ये सिंबल उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि दिस इज वन ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट और इसकी ये साउंड है और इसको दूसरों से मिलाएं तो ऐसी साउंड्स बनती हैं. ठीक है ना? तो हम इनको सिंबल्स को हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं और उनका मीनिंग हम डिकोड भी कर लेते हैं और फिर हमें उसकी लैंग्वेज की समझ आती है. सो फॉर सम रीडिंग इज जस्ट recognizing the symbols, the letters on paper and being able to know what the word is. And for some others, they say that the focus is on the meaning. So only recognition is not important, but the meaning is also important. So definition by Fox says that being able to make sense out of print. कि जो लिखा है आप उसकी sense बनाएं and you are able to understand the meaning presented. For Carlin, the definition is reading is in a fuller sense involves more than merely pronouncing words. खाली pronounce करना काफी नहीं है. It is comprehending what writers say and mean. So understanding develop होना and identifying the purpose behind that written material, उसको read करके writer का purpose समझ लेना और उसकी intention समझ लेना, that is an important part of reading according to Carlin. According to Perkis and Guerin, इन्होंने क्या कहा है कि so many assumptions are made about reading that once a child has been declared able to read, often little is done by the teacher to refine that skill. So यानी कि हम क्या कहते हैं कि जी अगर इसको पढ़ना आ गया है, लेटर्स को मिला के वर्ड्स को समझना आ गया तो फिर उस स्किल को मजीद डेवलप नहीं किया जाता. But there is a lot going on when you're actually reading something. So a vast array of skills make up the competence in reading. और वो skills में क्या क्या चीजें शामिल हैं? Visual perception, discrimination refer to the ability of the eye to distinguish shapes of letters, their different combinations into words, phrases, sentences, paragraphs, and larger text. These allow us to comprehend the printed page and thus increase our vocabulary. So, आप पहले visually किसी चीज को perceive करते हैं कि okay, यहाँ पे text लिखा हुआ है, यहाँ पे text जो है नहीं लिखा हुआ. उसके बाद आप क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि कौन सा लेटर कहाँ लिखा हुआ है. फिर उन लेटर्स को कंबाइन करके किधर किधर वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, और फिर लार्जर टेक्स्ट की किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, कितना लंबा है, इसकी कॉम्प्रिहेंशन क्या है, क्या नहीं है, ये सारी आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी पड़ती है while you're reading, and you have to focus कि स्टूडेंट्स की भी ये डेवलप हो जाए. The development of comprehension and vocabulary are directly related to what we have previously experienced through all our senses and life circumstances. और जिस तरह के हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को जो रीडिंग के थ्रू हम अक्वायर करते हैं उसको उसी हिसाब से हम समझते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर हमें पता है कि ये कलर ब्लू है तो अगर हम वर्ड ब्लू पढ़ेंगे हमारे जहन में फॉरन मेंटल इमेज आ जाएगा कि ओके डार्क ब्लू है तो ऐसा है, लाइट ब्लू है तो ऐसा है. ओके, सो the brain translates these things we see into thoughts and ideas on which our mind can comment. This is to say, gives us the opportunity to have opinions, think critically, draw conclusions, and make inferences and judgments which affect our lives in ways more profound than we sometimes realize. So whatever new we read, हम उसके बारे में सोचते हैं, we make opinions, we think critically, हम कोई conclusion draw करते हैं, अपनी कोई ना कोई judgment और उसके बारे में inferences यानी अंदाजे लगाते हैं, और फिर ये हमारी knowledge का हिस्सा बनके हमारी future life को भी किसी ना किसी तरह से affect करती है. So
रीडिंग अब आप समझ सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिविटी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है। और इसमें कॉन्स्टेंट जो है इम्प्रूवमेंट एंड रिफाइनमेंट की भी ज़रूरत रहती है। एंड द फंडामेंटल गोल ऑफ रीडिंग इज़ टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम राइटिंग or print. In order to understand textbooks, the reader must also deal with the graphs, diagrams, and illustrations that clarify and extend the meaning of the written material. और ये स्किल्स जो हैं ये लिटरेचर पढ़ने में भी इस्तेमाल होती हैं। हमें हर तरह की डिफरेंट तरह की रीडिंग टेक्स्ट को समझने के लिए ये सारी स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करते हैं। किसी तरह के टेक्स्ट को करते हुए हम पहले टाइटल देखते हैं, पहले तस्वीरें देखते हैं। किसी तरह के टेक्स्ट को हम पढ़ते हुए कोई बाकी सारी चीज़ें छोड़ के हमें जो अपनी मकसद की चीज़ है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो किस किस तरह की स्ट्रैटेजीज और मॉडल्स जो हैं वो रीडिंग के लिए यूज़ होते हैं, ये हम आज कुछ कवर करेंगे। So we are going to cover 3 models of reading या reading process आप इसको कह लें। और इसमें basically the first one is the bottom up model, the top down model, and then the interactive processes model. और इसमें नेम से भी आपको कुछ पता चल रहा होगा कि बॉटम अप से यानी नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, टॉप डाउन ऊपर से नीचे को जा रहे हैं, और इंटरैक्टिव में बहुत सारे होलिस्टिक रीडिंग को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली जी चल रहे होते हैं। सो बॉटम अप मॉडल में आप पहले एरो को देखें कि द डायरेक्शन इज फ्रॉम द बॉटम टुवर्ड्स अप। इसका मतलब है पहले ये स्टेप्स और फिर हम ये डेवलप करते 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 ऊपर चले जाते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप्स कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि सिंबल्स क्या हैं, और इस तरह हमें लेटर्स का पता हो, लेटर्स मिला के वर्ड कैसे बनते हैं, ये वर्ड्स मिलके जुमला कैसा बना रहे हैं, ये जुमले ने मिला के पैराग्राफ कैसा बनाया, तो हम ये सारे सिंबल्स को समझें। फिर हम असाइन करते हैं साउंड्स टू सिंबल्स कि ये जो लिखा है SYM इसको बोलना किस तरह है, सिंबल्स वी से इट आउट लाउड, हमें इसको रीड करना आता। Then organizing sounds and dealing with the problems of spelling and pronunciation. कि कैसे स्पेलिंग है, कैसी प्रोनाउंसिएशन है, वो करने के बाद हम रिकॉग्नाइज करते हैं वर्ड्स को, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को समझते हैं कि जी फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, सेंटेंसेस हैं। फिर उसका मीनिंग हम समझते हैं, इन्फरिंग मीनिंग फ्रेज का, क्लॉज का, सेंटेंस का, कि इस पूरे जुमले का क्या मतलब है। और फिर हम पूरे टेक्स्ट का मीनिंग एक होलिस्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस ये ऊपर जुमला है तो यहाँ पे मैं कहूँगी ओके ये स्टेयरकेस लिखा हुआ है, ये रीडिंग लिखा हुआ है, ये प्रोसेस लिखा हुआ है, ये इलस्ट्रेट लिखा हुआ है, ये फॉलोड लिखा हुआ है, ये ड्यूरिंग लिखा हुआ है, ये मे लिखा हुआ है। अब ये सारे वर्ड्स मुझे पढ़ने आते हैं, इन सारे वर्ड्स का मुझे मतलब आता है, ये सारे लेटर्स मैंने रिकॉग्नाइज कर दिए। अब इस जुमले का क्या मतलब है। फॉर द फर्स्ट टू अ स्टेयरकेस इज यूज्ड, यानी पहले दो मॉडल्स के लिए एक स्टेयरकेस की शक्ल इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे उल्टा आगे सीधा होगा। To illustrate the steps that may be followed during the reading process. अच्छा, तो यानी इस पूरे जुमले का ये मतलब है कि पहले दो मॉडल्स को स्टेयरकेस की शक्ल में इलस्ट्रेट करके रीडिंग प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस पूरे जुमले का ये मतलब है। तो पहले मैंने पहले एक एक वर्ड की तरफ से मैं पूरे जुमले की तरफ गई, अब ये हो गया बॉटम अप, ठीक है। So the bottom up process suggests that the reader starts at the bottom, doing the lowest level task of decoding the smallest parts, the symbols, then working out the meaning from the grammatical patterns. तो ये हो गया, ये छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा successful है, those who are beginners, those who are learning to read, those who don't have that much proficiency, who are yet to get accustomed to that language and its rules and its discourse and its sound। तो कोई नई लैंग्वेज सीखते हुए हम यूजुअली नए लर्नर्स के साथ बॉटम अप मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। देन कम्स द टॉप डाउन मॉडल। अब टॉप डाउन मॉडल में what we do is we follow the arrow, we go from top to the bottom, top down, ठीक है। और इसमें अब क्या कर रहे हैं हम कि हम प्रिडिक्टिंग कर रहे हैं of the content from the title, और पिक्चर्स देख रहे हैं, टाइटल देख रहे हैं, हम प्रेडिक्शन बना रहे हैं ओके ये पूरा टेक्स्ट इसके बारे में होगा। फिर हम जो है सैम्पलिंग करते हैं द टेक्स्ट टू कंफर्म द प्रेडिक्शंस। हम उसकी टेक्स्ट में से कुछ कुछ इबारत पढ़ते हैं, कुछ कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं ये जानने के लिए कि ओके हमारी अंदाजा और प्रेडिक्शन सही है, ये टेक्स्ट इसी चीज़ के बारे में है। और फिर हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं
ताकि हमारा जो ये प्रेडिक्शन के बारे में हमने हाइपोथेसिस एक अंदाजा लगाया था वो हमारा हाइपोथेसिस कंफर्म हो रहा है या डिनाई हो रहा है. ठीक है, so this is basically the top down model. The top down process assumes that meaning becomes possible only when the reader has experiential background related to the topic of the text. For instance, agar I am reading about a machine, so if I have a basic understanding about the structure of that machine or the shape of that machine, और मुझे पता है कि उसका पर्पस क्या है, तो then उस टेक्स्ट का मुझे फायदा होगा. If I am not familiar with that machine, I may not benefit from the text because I won't know कि क्या उसकी शक्ल है, क्या different parts का relationship है, क्या उसके functions हैं, या मुझे ये text पढ़ के क्या फायदा हो. ठीक है, so experience पे की base पे जो हमारा background knowledge है, that is important. The model emphasizes the use of information that the reader brings to the text and reader's use of prediction, interpretation, guessing in understanding the text. For instance, अगर ये मैंने आपको ये पढ़ाने से पहले मैं कहूँ कि जी ये रीडिंग प्रोसेस का हमने आज पढ़ना है और इसमें हमने ये मॉडल्स पढ़ने हैं, तो खाली एट अ ग्लांस आपको सिर्फ टाइटल देख के, ये हेडिंग्स देख के और ये वाले बुलेट्स देख के समझ आ जाएगी कि ओके हम रीडिंग प्रोसेस के 3 मॉडल्स को पढ़ने लगे. लेकिन अगर कोई बिगिनर रीडर होगा वो पहले पढ़ेगा कि ओके PROCESS क्या है, ये रीडिंग है, रीडिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसकी ट्रांसलेशन क्या है, ये जुमला लिखा है इसका क्या मतलब है, वो इस चीज में होगा, फंसा रहेगा, वो बॉटम अप पे जाएगा. तो द टॉप डाउन अप्रोच इज यूज्ड विद द मोर एक्सपीरियंस्ड रीडर्स एंड लर्नर्स. और इसमें बेसिकली हम जो है क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन, प्रेडिक्शन और इस तरह की जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को हम इस्तेमाल करते हैं. द थर्ड वन इज द इंटरैक्टिव प्रोसेस, व्हिच इज द प्रोसेस व्हिच रिकॉग्नाइजेस बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेस. और फिर this is understood that they complement each other. A reader may decode words to take in the writer's ideas, then use his or her own knowledge to interpret the ideas. तो यानी कि राइटर के आइडियाज को डीकोड करके वर्ड से भी मीनिंग ले रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को भी अंदर आप लेके आ रहे हैं. इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रीडर भी चाहिए और रीडर को इंटरैक्ट करना पड़ता है टेक्स्ट के साथ इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मीनिंग. और ये पूरे आइडियाज को जो है विलियम्स एंड मोरान ने कहा है कि रीडिंग इज सीन एज अ सेलेक्टिव प्रोसेस taking place between a reader and a text in which background knowledge and various types of language knowledge interact with information in the text to contribute to text comprehension. Now I'm going to quickly share with you and show you a video which is talking about this interactive process a bit more. So let's just cue that in. The interactive model of reading. This presentation shares the interactive or triarchic model of reading and explains the 3 factors that influence reading comprehension. These concepts will help guide how you establish reading instruction routines in your classroom and coach students in the reading skills of your discipline. These concepts will also help shed new light on the reading that takes place in your classroom and how you shape it. Let's explore the interactive model of reading. It's important to know that there are 3 key factors that interact to shape the process of reading comprehension: the reader, the text, and the activity. All of these components contribute to how well a reader understands a text, or does not understand it. Comprehension occurs in the interaction among reader, text, and activity. Thus, reading comprehension will vary based upon all these same factors. This is important to note because it reminds us that we can shape and improve comprehension by not only helping the reader, but also by carefully selecting and preparing texts, as well as by thoughtfully and creatively designing effective reading activities. Let's talk first about the reader. Readers bring many different characteristics to the table when they approach a text. First, they enter this interaction with prior knowledge, or lack thereof. What did the student know prior to reading about the topic, and what does the student know of topic vocabulary and language conventions? What skills and strategies can this student apply while reading? Students also bring different levels of motivation. Is the student's motivation to read intrinsic, internal, or extrinsic, external? Then there's interest. Is the student intrigued by the subject of the reading? Finally, what is the reader's self-concept? How proficient does the reader perceive him or herself to be at reading? These are just some of the characteristics of readers that impact a student's comprehension of text. Then there is the text. Readers interact with texts as they try to understand them,
and texts have their own features that can help or hinder comprehension. These are components of the text a teacher can analyze prior to instruction. There's language. What is the level of vocabulary and syntax? There's a level of abstraction. How conceptual is the language and the knowledge, and how technical in its detail, requiring a greater level of analysis on the part of the student. Then there is the topic itself. What is its relevance and utility to the student and his or her past, present, and future? Structure also matters, how the ideas and arguments are organized, and the clarity and logic of the flow. Finally, there is style. How do diction, voice, rhythm, syntax, and other text features interact to engage the reader? All of these elements have impact on a student's comprehension. The third key factor in the interactive model of reading is the reading activity. At play here are a range of activity-based factors that impact a reader's comprehension, including purpose, relevance, connection, and clarity. Purpose. Why are students doing this activity? Can they see the larger goal behind the task you assign? Relevance. How relevant is the task to the student's life? Is there an opportunity to solve a meaningful problem or grapple with an idea that has utility in a student's life? Connection. How might a student connect this reading task with the real world, with past and future instruction, with an upcoming assessment? Clarity. How clear is the task, its directions, its standards for evaluation, and its outcomes? These components interact in an instructional context that also plays an important role. Are there 24 kids in your class or 38? Is your room too hot or too cold? Is it the last hour on the day before a big holiday break? Was there a fight in the hallway just before class? All of these factors affect the ability of your students to read in your classroom. You will be able to control some contextual factors, but some will be out of reach. The point is to recognize that they do have an impact. So what are the classroom implications for your instruction? What leverage does this knowledge give you? First, an awareness that comprehension lies not just in the reader can help you understand that one student might read more effectively when there are differences in the text and activity. Change the text or the activity, and you may influence students' performance. Consider your students' knowledge base and reading proficiencies as you choose text and develop activities. Try to pick texts that are engaging, that introduce students to different content area genres, and that challenge them. Assess both the knowledge and language demands of text and build the appropriate scaffolds into your activities. Scaffolds might include think-aloud modeling, reading guides, graphic organizers, or mini-lectures to build knowledge. For more difficult texts, integrate more scaffolds into your activities. As your students get more experience tackling difficult texts, progressively remove scaffolds. When knowledge building is needed, choose texts that are more accessible so that students can focus on building important background knowledge. Now that you know the interactive model of reading, you have 3 lenses with which to view comprehension. What do your students already know, and what can they do when it comes to reading? Is the text easily accessible to some students but not others? And how will the activities support comprehension in a meaningful, relevant, and scaffolded way? This table, Reader Text Activity, is a guide for you as you consider a text and develop an activity. After viewing this presentation, you can access a handout version of it for planning your lesson in reading instruction. Okay, so I hope you understood the interactive model where they mentioned 3 factors which affect comprehension. Please listen to and watch this video very carefully, and we can have a discussion in our Zoom session. And also, जो end पे video के जो table दिया हुआ था, have a look at it in detail, and I would expect you to be able to explain the different things mentioned in the table in detail. Okay, see you inshallah next time. Okay, for now, Allah Hafiz.